post match of two new IPL teams. So Gujarat, Lucknow playing their first match in the IPL in 2022, playing it against each other. Will you call it the most exciting match of IPL so far? Hi Vidit, firstly, thank you for having me and welcome to the Sports Stars audience. No, I would not say that this was the absolute thriller that both the new teams would have expected or the fans of the new teams would have expected. Slightly low scoring match on that front, considering that you're playing in Mumbai at the Wankhede, which we all know is a high scoring ground. And, both the teams did have those power players who can hit big. But I think Mohammad Shami from the word go never let Lucknow get that momentum because of which they never reached a high score. And then again, Gujarat also while chasing did give us those jitters in between. But Rahul Tewatia managed to get them home. तेवतिया द मैन ऑफ द मोमेंट अगेंस्ट केएल राहुल आई थिंक अलग ही ग्रज पकड़ लिया उन्होंने राहुल को मतलब जीतने ही नहीं देंगे. बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हो। जैसे पहले राजस्थान वर्सेस पंजाब में वी ऑल रिमेंबर दैट मैच इन शारजाह जहाँ तेवेतिया ने 5 छक्के मारे थे। आई थिंक शेल्डन कॉटरेल थे बॉलर करियर खत्म कर और दिया उनका आईपीएल करियर इज ओवर. कॉटरेल बिल्कुल, ओवर बाय बिल्कुल, बिल्कुल। तेवतिया एंड 9 करोड़ प्राइस टैग. लोग कह रहे थे बहुत हैवी प्राइस टैग है तेवतिया का 9 करोड़ क्यों. आज उन्होंने हुँ, बॉलिंग नहीं हुँ। की बट यू सॉ हिम विनिंग द मैच विद द बैट. राइट सी आप अगर पर्सनली मुझसे पूछिए तो मैं भी कहूंगा 9 करोड़ मुझे भी थोड़ा ज्यादा लगा था कंसिडरिंग तेवेतिया बैट्स लोअर डाउन द ऑर्डर ही इज नॉट अ श्योर शॉट bowler who will bowl for overs at the time at sometimes I also feel his injury concern and his fitness is also a concern at some times but then again आज के मैच में definitely वो खरे उतरे हैं. And I'm sure now going ahead, Gujarat will also give him a lot more weightage. We might see him come up the order at times if the situation arises, and we'll definitely see him bowl in the next game. Coming to Shami, you already said about his performance. Lucknow बोल रहे थे bats top heavy. You get KL Rahul, you get Quinton, you get Manish Pandey, and Lucknow is gone. And that exactly happened. Do you think Gujarat थोड़ा easy हो गए उसके बाद उनको लगा कि यार ये तो 100-120 पे ऑल आउट कर देंगे. हुआ क्या exactly? What went wrong? And why did even Lucknow reach a stage of 160 score? वहां पे आई थिंक थोड़ा सा कैप्टेंसी की कमी दिखाई हार्दिक पांड्या ने. पहले कप्तान है आई डोंट थिंक हार्दिक पांड्या ने कभी अपनी डोमेस्टिक टीम को भी लीड करा है. सो ऑन दैट फ्रंट आई फील जब मोहम्मद शमी इतने अच्छे रिदम पे थे और बॉल सीम हो रहा था और लखनऊ की टीम बैकफुट पे थी कंसिडरिंग आपने ऊपर की 3 निकाल दिए तो आप यू आर श्योर दैट नंबर 5 and 6 आर नॉट will not be used to playing the new ball and especially at the pace of Mohammad Shami 140-145. There, I think Hardik could have bowled him out and gone for another wicket. There, I think he missed a trick. उसके बाद But I he think जब still थोड़ी bowled 3 overs of Mohammad Shami on the trot, which Shami doesn't usually bowl. राइट सी वो तो इसी थर्ड ओवर भी इसलिए डाला ना बिकॉज विकेट आ रहे थे. Correct. देन यू गेट केएल राहुल इन द फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच दैट गिव्स यू अ बिग अपर हैंड. उसके बाद इन द सेकंड ओवर ऑफ मोहम्मद शमी ही गॉट क्विंटन डिकॉक. उसके बाद वन कुड हैव फेल्ट की थर्ड तो बनता ही था एंड मे बी फोर्थ जब थर्ड ओवर में मनीष पांडे को आउट कर दिया. सो देन यू फील उनके कौन थे उस वक्त आई थिंक But दीपक Shami हुड्डा is आए not थे the क्रीज पे. most fittest of bowlers. We also need to see his fitness as well. Agreed, agreed. So maybe that was also a case in point that Hardik Pandya maybe he would have spoken to Ashish Nehra or Mohammad Shami और उनको हो सकता है as a collective decision था to hold Shami back. But I think वहां पे उन्हें थोड़ा सा कॉस्ट करा या फिर मे बी वहां पे एक और विकेट टेकर ऑप्शन होते अगर गुजरात के पास फर्स्ट चेंज पे तो they could have restricted Lucknow. But no credit should be taken away from the way Ayush Badoni and Deepak Hooda batted in the middle. Two young guys, a lot of chatter around Deepak Hooda and how he will play in Lucknow with Yeah. alongside Kunal Pandya, especially them batting at 6-7 and आज तो गले 5-7, मिले हैं 5-6. दोनों मतलब कृणाल हाँ पांड्या हाँ तो celebrating Deepak Hooda's wicket so passionately. I think that's the story of the night. And we saw Wasim Jafar put a post क्योंकि सास भी कभी बहू थी. He posted that song along with their photo. And Wasim Jafar's social media game is just getting stronger day by day. Oh, absolutely. Wasim Jafar is on fire. I am Yeah. sure जो सारे स्पोर्ट्स पब्लिशर्स और डिजिटल मीडिया हाउसेज हैं स्पेशली आईपीएल के टाइम में वसीम जाफर से 10 मिनट आधे घंटा रिक्वेस्ट कर रहे होंगे. आई एम होपिंग स्पोर्ट्स ताजा पे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बड़ी जल्दी हम वसीम जाफर को यहाँ पे भी देखें. बट सुपर आई थिंक सुपर फॉर द लखनऊ टीम्स ऑप्टिक्स फॉर देयर पीआर.
that both these players have come together Yep. and they have enjoyed each other's performances. And I think more importantly, कि पहले match में both of them have performed to a big extent. So I think that has been one positive takeaway for Lucknow in that sense. कि ऊपर के प्लेयर्स जल्दी आउट होने के बाद भी उनके 5, 6, 7 ने संभाल लिया. और यहाँ देखो आप, ऐसा नहीं हो कि लखनऊ by the 20th over lost 8 or 9 wickets. They still seemed in Correct. control. So that talks about the professionalism and maybe the whole mentality and the professionalism which Gautam Gambhir brings to the table. And also, Gambhir rated Ayush Badoni very highly. He was a Delhi player in the Ranji team. And काफी प्रेशर में लग रहे थे. He was 11 of 22 of 23 balls at one point, and then he struck some blows, got to his 50 in his first match here for Lucknow. And Deepak Huda, how crucial was their partnership? I think that was very crucial to give Lucknow a credible and respectable score that they got at the end. I think hats off to Ayush, considering it's his first game, the faith that the team management and Gautam Gambhir has shown in him. And he was sent Uh, above Krunal Pandya to bat. एग्जैक्टली ही वाज. सो आई थिंक उनका Yep. रोल वहां पे यही था जो आई थिंक मिड इनिंग्स इंटरव्यू में आयुष ने कहा भी कि व्हेन आई वेंट इन आई जस्ट वांटेड टू टेक सम सिंगल्स गेट माय आई इन. एंड ही सेड जब मेरा पहला चौका लगा ना, देन आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस एंड गॉट दैट फीलिंग दैट यस आई बिलोंग हियर. एंड देन अगेन सी विद वी ऑल नो कि एक बार वानखेड़े जैसे पिच पे आप 15-20 बॉले खड़े हो जाते हो ना, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप एनी बैट्समैन. So I think that way Ayush को credit देना चाहिए कि he took his time and also see because that situation allowed him to take that time. यही अगर Ayush would have come in the 16th over and maybe Lucknow were looking to make 200 220 तो वो इतना time नहीं ले पाते. But यहाँ उनके पास balls थी, a team had to consolidate at that point of time, so everything worked out well for him. Absolutely. Now coming to Gujarat Titans innings, did not have a very good start. Chamira getting those two crucial wickets. You were talking about Hardik Pandya as a captain. Now we'll talk about KL Rahul as a captain. The most economical bowler didn't bowl out his 4 overs. Do you think there's an issue with KL Rahul, the captain? See, यहाँ पे ना And whatever he's a answer I future give. Indian captain. I'm telling you, he's a future Indian captain. And there have been multiple questions on KL Rahul's captaincy, even today in his first IPL game as well. Right. Now, with it here, like I was saying, when I give this answer, there is a little bit of personal bias involved. I do not consider Yes, so KL just to tell Rahul to be a you good why we are captain. talking about KL Rahul's captaincy, yes, because Dushman Shamira, the most economical bowler for LSG, did not bowl his 4 overs. Yes, Rohan, please continue. Yeah. So what I was saying, KL Rahul ka, this is not his first season. This is not his first match as the captain, right? He has captained Kings 11 Punjab for 3 years now, for three अब seasons. तो उनको And youngster भी नहीं बुला सकते. KL Rahul is not a youngster anymore. exactly, he isn't. At this age, this is the peak of his career. एक इंडियन क्रिकेटर जब 26 साल 27 साल की उम्र को क्रॉस कर लेता है, अप अंटिल 32 33 30 34 लेट्स से, दो 6 7 years, किसी भी बैट्समैन का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, वेदर इट इज दिस करंट जनरेशन ऑफ रोहित विराट और द प्रीवियस जनरेशन ऑफ सचिन द्रविड़ लक्ष्मण युवराज सिंह सहवाग, ऑल एवरीबडी पीक्स इन दिस टाइम. दैट एज बिकॉज आप मेच्योर हो जाते हो, आप वर्ल्ड वाइड आपने एक एक टूर कर लिया होता है. Anyway, coming to the captaincy, I think KL Rahul ने पंजाब में भी पंजाब में भी also when he was captaining, there were a lot of eyebrows raised on him. We did not see any strategy. And I think यहाँ पे भी मेरा personal level पे भी यही doubt था when Lucknow were backing him as the captain and Indian team is also backing him as the captain, which I am a little worried about because I have never seen KL Rahul raise his hand and say, yes, I want to be the captain. He has not shown those characteristics on the field even when you're standing, fielding But any Rohan, if slips. you're already a captain of Punjab Kings for 3 years, you want to shift to another franchisee, you won't go to any place less than a captain. मतलब आप एक जगह कैप्टन हो, टीम नहीं चल रही, ठीक है. There's so much responsibility on you to anchor the innings in every match. But if you want to shift your franchisee, आप कैप्टन तो minimum मांगोगे ना मतलब. सी ऑफ कोर्स आप मांगोगे. अब ये तो यहाँ पे विद काफी नॉन क्रिकेटिंग फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं फॉर अ न्यू फ्रेंचाइज टू हैव अ प्लेयर ऑफ केएल राहुल्स बैटिंग स्किल में कोई डाउट नहीं है. अ प्लेयर ऑफ हिज let's say repute in today's time, a player of his image, what it adds to a new franchisee in terms of marketability and other commercial assets. I think वो factors भी आते हैं. Then again, every franchise wants an Indian captain. इस ऑप्शन के बाद भी हमने देखा देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ चॉइसेस. आप अगर एक बार केएल राहुल को पिक्चर से हटा भी दो, who will you bank that Lucknow franchise would have gone for as the captain?
when you see that Punjab has have replaced KL Rahul with Mayank Agarwal, एंड मयंक अग्रवाल ने भी कोई कर्नाटका के साथ किसी भी एज ग्रुप लेवल पे या रणजी लेवल पे भी नहीं कैप्टनसी करी. So these are all very fresh captains. I'm sure they will learn. But yes, with KL Rahul already being pictured as a future India captain, and he has captained India in a few matches Yeah, in the recent past, तो I think वहाँ थोड़ा concern मुझे लगा. दुष्यंत चमीरा का आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया. I don't see how he could not have bowled the 4 overs. क्योंकि आप देखो एंड में भी अगर डलवाते ना, एंड में कौन बैट्समैन बैटिंग करे थे. एक बार तो वैसे मिलर भी आउट, अभी मिलर के बाद इंडियन बैट्समैन तो पेस के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल कर सकते थे. या बिल्कुल. बीच में भी जब वो अपने सारे स्पिनर्स को डलवा रहे हैं, जब बिश्नोई डाल रहे हैं, हुड्डा डाल रहे हैं, कुणाल डाल रहे हैं, मे बी ही कुड हैव ट्राइड देयर कि एक विकेट अगर अभी लेने के लिए मैं जाऊं. सो आई थिंक दो तीन इंस्टेंसेस थे वेयर ही कुड हैव ऑप्टेड फॉर चमीरा, बट देन अगेन मे बी इन हाइंडसाइट ही माइट रिग्रेट दैट डिसीजन. So KL Rahul has never scored against Gujarat. Even in 2016, the first match against Gujarat, he got out on a duck. In 2022, once Gujarat franchise is back, he's got out on a duck again. Also, एक चीज और, how happy are you with Hardik Pandya's performance? He bowled his quota of 4 overs. Last ओवर में पिटे और 4 ओवर डाले. Fitness proof करनी है. Came to bat up the order, scored 30 plus runs. Was looking in decent touch also. So are you happy with that? Yes, personally, I'm very happy. पहली बार मुझे हार्दिक पांड्या के करियर में लगा that yes, he is under the pump and he's trying to come out of it, not hit out of it. Yep. Usually, we've seen him hit out of it. Now he's trying to face that criticism Is that he that got in his because he's last. captain and there's that additional responsibility pressure? Partially, yes, captaincy, new franchise, that pressure. Second, also now because he has been out of the Indian setup for a while. I would say his last full season with Indian team was 1920. उसके बाद in and out रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा टाइम खेले, but just as a batsman. So I think a few factors have added up. Last T20 World Cup, again, there was this whole drama around Hardik Pandya, whether he's playing Yep. as a batsman or an all-rounder. Come this T20 World Cup, we might face the same situation. So to avoid that, it is good that Hardik Pandya is bowling. मैं उनके स्टैट्स के बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं हूँ. वंस यू बोल द मोर यू बोल ही विल गेट बेटर. पहले भी वो कोई हर मैच में 4 ओवर डाल के आपको 3 विकेट नहीं लेते थे, अभी भी नहीं लेंगे. बट यस, He'll व्हेन ही always बोल्स play एंड to fill your squad balance as the sixth bowler always. Hardik Pandya cannot be the fifth bowler in any team. But today if you see, तेवतिया थे, विजय शंकर थे, अभिनव मनोहर थे, इन तीनों ने एक भी ओवर नहीं डाला. मतलब is that just because Hardik Pandya wants to prove his fitness? आई थिंक वो सोल रीजन नहीं होगा, बिकॉज एज अ कैप्टन यू हैव अदर थिंग्स ऑल्सो टू थिंक ऑफ. बट ये एक कैप्टनसी में थोड़ा कभी इशू जाता है व्हेन यू आर अ बॉलर ऑल्सो ना, टू मैनेज योर ओवर्स एंड टू मैनेज द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स के ओवर्स. आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट, सो यस आई फील एक थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है. विजय शंकर नॉट बॉलिंग, आई डोंट फील कुछ उसमें और रीजन था. राहुल तवेतिया, आई थिंक यस, हार्दिक पांड्या मे बी मिस, उनको एक दो ओवर तो जरूर बनते थे. बट लेट्स इवैल्यूएट दिस सिचुएशन आफ्टर 3 गेम्स. आज एक हुआ है, दो Yep. और गेम्स देखते हैं, बिकॉज पिचेस तो देखो सेम ही रहेंगे, ज्यादा फर्क नहीं आएगा. तो हम कहें कि एक्स्ट्रा स्पिनर, लेस स्पिनर, वो कॉम्बिनेशन मोटा मोटा सेम ही खेलेगा फॉर एवरी टीम. Now coming to Gujarat's batting, Shubman Gill also getting out in a duck. I personally feel Gill needs a 450 plus season for him to cement his place or even make that squad reckoning for India because KKR में मतलब मार रहे थे पर लोग कहते हैं T20 बैटर रहे नहीं है. And Gill needs a strong season and with Gujarat not being so batting heavy, he can easily do that I feel. Second, Wade getting some good runs and good partnership with Hardik Pandya in the middle, and then those three crucial knocks in the end. Tewatia की बात कर चुके हम. How Tewatia does a Tewatia, only he can do that. Then Miller and Abhinav Manohar. Manohar finishing the match, coming into his first game only, and scoring two boundaries of the last over. 11 or 6 था, दो boundaries उन्होंने मारे. And there's been a lot of talk about him. He has a heavy reputation of being a good finisher. जैसे अब्दुल समाद का बोलते थे कि अच्छे finisher है. राइट. वो कह रहे हैं अभिनव मनोहर भी बिल्कुल पावर हिटिंग फिनिशर्स हैं. एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा. मनोहर के बारे में काफी चर्चा हुई है इस आईपीएल से पहले. इससे पहले जो एक दो ऑक्शन हुए थे तब भी चर्चा हुई थी, बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने दिखाया है कर्नाटका के लिए कई बार ही इज हिट some crucial knocks towards the Yep. end of the innings. He's gotten them out of a hole as well on multiple occasions that I can remember. Uh, Firstly, for Shubman Gill, I was very disappointed with that shot because he is somebody who can score at 140 ka strike rate with proper cricket shots. You are not chasing a 220
total here. करेक्ट. Bat yourself. You know you have a thin batting lineup. वानखेड़े है, सेकंड बैटिंग कर रहे हो, ड्यू आने वाली है, क्या टेंशन है आपको? 158 बनाने हैं. बिल्कुल, आप मुझे विद इन एक प्लेयर बता दो जो वेंकटे पे अगर 40 बॉल खेल ले और 60-65 रन ना बनाए, इम्पॉसिबल है. आपने अगर इम्पॉसिबल. 40 बॉल खेल ली, 60 रन तो अपने आप ही बनेंगे. So करेक्ट. that's where I felt that Shubman Gill and to him also अगर हम कहते रहे ना 2 और सीजन की वो यंगस्टर है, I don't think we will do him any justice मतलब because ये फिर तो तो प्री पॉलिटिक्स की तरह हो गया कि राहुल गांधी अभी भी यंगस्टर है. मेरे हिसाब से कोई यंगस्टर रहा ही नहीं है अब. एग्जैक्टली आप फिर अगर यंगस्टर ये तो आपने उसको इतनी जल्दी प्रमोट क्यों करा अंडर 19 के बाद बिकॉज आपको वो एक्स्ट्रा स्किल दिखी ना उसमें एबिलिटी करेक्ट. दिखी तो वो उसको यहाँ दिखानी पड़ेगी वरना तो आप उसको यू शुड लेट हिम गो थ्रू द ग्राइंड ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट सो देयर आई वाज डिसअपॉइंटेड विद शुभमन ही नोज द टीम हैज अ वेरी थिन बैटिंग लाइनअप अ लॉट रिलाइज ऑन हिम लोअर स्कोर था बैट थ्रू द इनिंग्स प्ले विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 120 130 बाकी रन तो बन ही जाएंगे व्हेन यू नो आपके पास अब एंड में तेवेतिया है हार्दिक है मिलर है मनोहर है और वेड ऑल्सो हैड शुभमन गिल राशिद स्टक अराउंड खान वेड भी वुड है, हैव प्लेड राशिद खान भी फ्रीली मार ही देते हैं, ऐसी राशिद बात नहीं. खान है राशिद खान एग्जैक्टली एंड आई फील बिकॉज शुभमन गॉट आउट ना वेड गॉट अ लिटिल कंफ्यूज्ड मेरे यप. ख्याल उनका रोल पहले फिक्स्ड होगा कि गिल हैज टू प्ले एंड वेड हैज टू करेक्ट. यू नो बी द अग्रेसिव person but I think there they got confused maybe up team meeting may they'll address that issue that what happens if Gill gets out early. Definitely, and very two crucial points for Gujarat starting the campaign on a win. I'm sure Hardik would be a happy captain. Krunal Pandya got his wicket, did not celebrate. The brothers actually playing against each other. काफ़ी मुझे लगा नहीं था दोनों भाई अलग अलग टीम्स में खेलेंगे, बट वेरी वेरी हैप्पी विन फॉर गुजरात. हैप्पी पर्सनली टू सी हार्दिक पांड्या बोल. हिज स्पॉट इज Right. सर्टनली इन अ कंसर्न. वेंकी अय्यर एंड बोथ मेरे हिसाब से दोनों वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो होंगे ही होंगे. प्लेइंग 11 में कौन जाता है उसकी फाइट है. And this IPL is so crucial for so many players. On that note, thank you for watching. Do subscribe to Sports Taza for more